नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि 8th एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड करंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस। आई थॉट कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हुए जिनका पूरे वर्ल्ड में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा और रशिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ना ही था। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थे, जो वहां पे रेवोल्यूशन हुई, उसने जो लोगों को आइडियाज दिए, उसका कुछ इम्पैक्ट रशिया पे भी पड़ेगा। हम देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और रशिया यूक्रेन is such a recent and hot topic that I thought it would be a nice thing to do some series on that situation currently. In today's episode, we will spend some time on building background as usual, जो हम करते आए हैं। पिछले सीरीज में भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफी बड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करा था। और इस एपिसोड में स्पेसिफिकली हम लोग अबाउट 500 to 600 years ऑफ रशियन हिस्ट्री को देखेंगे। और यहाँ पर एक बात जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ वो यह है कि हम रशियन हिस्ट्री पर से पे उतना फोकस नहीं करेंगे, बट मतलब उतना ही फोकस करेंगे जो करंट क्राइसिस को अप्रिशिएट करने में हमें हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम रशियन हिस्ट्री तो टोटल आज के एपिसोड में अबाउट 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन, अ वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम 13th century to 1721 Russia, and then from 1721 we will move to end of Napoleon's basically end of Napoleon Battle of Waterloo, that is 1815 16, and then we will move forward from there. um, तो सबसे पहले 13th century में सिचुएशन ये थी कि रशिया was divided into small principalities ruled by independent princes, and Mongols invaded Russia, these lands in 13th century, established a kingdom called the Kingdom of Golden Horde, and became overlords to all the Russian princes. And that continued for about 2 centuries until 15th century when the Muscovite princes, the princes in that region began uniting the lands of Russia under Ivan the Great. ये आइवन थर्ड थे और इनको आइवन द ग्रेट भी कहा जाता है। एंड इट एंडेड द Tatar domination in that region. And Tatar is what Mongols were called in Russia. So it ended the Tatar domination after the battle of Ugra River. और ये बैटल नहीं हुआ था, देयर वर लाइक इट वाज अ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन मंगोल्स एंड दीज यूनाइटेड रशियन प्रिंसेस अंडर आइवन द ग्रेट. After Ivan the Great came Ivan the Terrible. इन्होंने, and he was called by that name because he unleashed a reign of terror in 16th century against the hereditary nobility. One thing about Russia is that nobility from the very beginning was extremely weak in Russia. It was just the Tsar, the autocrat, the monarch, and the commoners. उनके बीच में बहुत ही कम लोग थे, एज अपोज टू हमने जो थोड़ा वेस्टर्न यूरोप में देखा था. And finally, in 17th century, Michael Romanov is elected as the Tsar, and that marks the beginning of the rule by Romanovs, which basically now will continue until the Russian Revolution in 1917. So from 17th century onwards, all the rulers, all the czars were of Romanov वंश, जिसे कहते हैं. Now, in 1721, under Peter the Great, Russia starts acquiring huge masses of land. देखिए, रशिया का ऐसा कहते हैं कि उनकी, like in the world history, if there is one country that has done the biggest land grab, it is Russia. मतलब गए land grab, मतलब गए और थोड़ा सा कॉन्कर किया या थोड़ा सा बस जाके एनेक्स कर लिया लैंड्स को. So under Peter the Great, Russia acquires territories of Latvia,
Estonia from Sweden, and now Russia established its presence in Baltic Sea. पीटर द ग्रेट ने वही काम किया था जो एक टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने देखा, विच इज कंस्क्रिप्शन ऑफ आर्मी एंड नेवी. मतलब whoever is the able bodied man, and can fight should should take part in army and fight. तो ये कंस्क्रिप्शन कर दिया था, तो इसलिए और पावरफुल हो गए थे. And Peter the Great subordinated the church, as again we saw in some of the situation in Western Europe as well. Or under subsequent czars, Russia continued the policy of land grab, and between 1721 to 1815, Russia conquered Crimea, Ukraine, Georgia, and areas of what later became Belarus, Moldova, and parts of Poland. मतलब लगातार अपने किंगडम को मतलब कंट्री को एक्सपैंड करते ही रहा रशिया. किंगडम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जार्स थे तो अभी उनको तो किंगडम ही लगता था. और रशिया इसलिए अब लाइक इतना बड़ा इन साइज, लाइक इट वाज सो बिग इन साइज बाय 1815 दैट इट आई मीन इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड masses, है ना. तो and not just like while this land grab was happening, Russia largely stayed autocratic. None of these reformation kind of ideas or none of the new reforms actually came to Russia. Like if you see that in Britain, for example, right? Like British Magna Carta of 13th century, which was basically the first document to put in writing that king and his government was not above the law. है ना. Similarly, 1688 Germantown petition against slavery, which was basically done by a religious group, is another example of reform. But none of these reforms happening in Western Europe could ever influence Russia. It largely stayed autocratic. अब हम लोग 19th सेंचुरी के स्टार्ट में आ गए हैं, मतलब 1807 में है. एंड एज वी हैड डिस्कस्ड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन series, that Napoleon at that time in 1807, at almost peak of his power, defeated Tsar Alexander first in one of those Napoleonic wars, जो कोलिशन वॉर्स हम कह रहे थे, कोलिशन वॉर्स. और कोलिशन वॉर्स में रशिया एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट हुआ करता था. तो नेपोलियन डिफीट जार अलेक्जेंडर वन एंड दे साइन दिस ट्रीटी कॉल्ड ट्रीटी ऑफ तिलसित. एंड बेसिकली ट्रीटी ऑफ टिलसित हुआ कि आप वेस्टर्न यूरोप पे ध्यान दीजिए और मैं हम लोग इधर रशिया इधर ईस्टर्न यूरोप पे ध्यान रखेगा, और बीच में एक दूसरे को इंटरफेयर मत करो. But Napoleon being Napoleon, he invaded Russia, as we all know, in 1812, which ultimately became the biggest reason for Napoleon's downfall. After Napoleon's downfall, Russia and Austria wanted to reverse all those ideas of revolution, republicanism, liberalism. Because, like, they were, like, as I said, Russia was an autocratic country and it feared that some of these ideas will spread. And we will see that they will actually. आइडियाज को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है. देखिए, आइडियाज के साथ ऐसा होता है, आप उनको जितना सप्रेस करेंगे, कहते हैं आइडियाज जो हैं वो एंटी फ्रेजाइल होते हैं, जितना सप्रेस करेंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग ग्रो होते जाते हैं. But फिर भी they tried, and in 1815-16, Congress of Vienna was organized by an Austrian diplomat whose name is Clement von Metternich. So von Metternich and Tsar Alexander I organized the Congress of Vienna in the hope that they will reverse some of these ideas. And as a part of, like, again, like when Napoleon was defeated, kept advancing, Russian army kept advancing, and they basically said, like, we will reach Paris and we will not stop until then. And they reached Paris, and with some 300,000 soldiers, and literally like did a demonstration. And as soon as Russia did this demonstration, right? See, Russia, as I said, was a little cut off, so no one knew how powerful Russia could be. But when they did this demonstration with some 300,000 soldiers,
everyone of the European. France was already subdued. So now you had Britain, you had Prussia, you had Austria. Everyone got very, very scared. And especially Britain got very scared because उस समय तक ब्रिटेन ना अपना कॉलोनियल एम्पायर अच्छे से फैला चुका था या फैला ही रहा था. And as we all know that India was a crown jewel in their colonial empire. And Britain started feeling at that time that Russia wanted to annex or take India away from British rule. And this is also, this entire situation was also called as the Great Game in that century, which basically began, you can say, right after Napoleon was defeated till about 1907. और द अदर रीजन वाज इन दैट टाइम क्या हो रहा था कि जो आपका ऑटोमन एम्पायर था वो भी वाज इन अ डिक्लाइन. एंड देयरफॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस नाउ especially Britain wanted to prevent the spread of Russia, and therefore they wanted to preserve the Ottoman Empire. Russia wanted to spread across the Black Sea to the current parts of Hungary, Slovakia, Romania, Bulgaria, and Ukraine, and that were under Ottoman Empire at that time. And Britain was completely like supporting Ottoman Empire so that Russia could not expand. And all of these tensions led to a war in Crimea, like it's called the Crimean War in 1855 and 56. And surprisingly, Russia lost the war. As soon as Russia lost the war, it pretty much cut itself from other developments in Europe and tried to just keep its territories in the eastern part of Europe. तो अभी हम लोग 1856 पर हैं और अब यहां से हम 1856 टू 1917 वाला थोड़ा एरिया कवर करेंगे टाइम. नाउ इन 1848 कार्ल मार्क्स पब्लिश द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. कार्ल मार्क्स जर्मन थे, तो उन्होंने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में पब्लिश करा तो उन्होंने ये कहा that because of industrialization in countries like Britain and Germany, and because of the bourgeois government, bourgeois मतलब middle class government, middle class लोगों ने गवर्नमेंट बना दिए इन इंडस्ट्रियलाइज नेशन में, जिसके कारण जो आपके प्रोलेटरिएट है, जो गरीब लोग हैं, नीचे लाइक इकोनॉमिकली वीकर जो लोग हैं, उन पे बहुत ऑपरेशन हो रहा है. एंड ही कॉल्ड फॉर वायलेंट रेवोल्यूशन. Karl Marx said कि there has to be a proletariat revolution which has to be violent in nature, and he predicted that it will happen in one of these industrialized countries of either Germany or Britain. और जैसे ही कार्ल मार्क्स ने ऐसा कुछ डिक्लेयर करा, ऑल द यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स दे वर पुट ऑन हाई अलर्ट. दे कुड सेंस एन आइडियोलॉजी that was a direct threat to capitalism and industrialism in these countries, and they did everything to ensure that Marxism does not spread in these industrialized nations. And in that effort, they also started a lot of welfare programs. And Marx died largely dejected as none of his prediction came true. तो वो बहुत मतलब निराश होकर अंत में मार्क्स मृत्यु को प्राप्त हुए इन 1883. दूसरा ये था कि क्रिमियन वॉर ऑफ 1855-56 was also the beginning ऑफ द बाल्कन्स प्रॉब्लम. ये बाल्कन समस्या क्या है? बाल्कन समस्या उस प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है जो कि happened because of one, Russia's continuous interference in the declining Ottoman Empire and Britain's continued interest in not letting Russia do that. Also in 1871, Germany started unifying under Otto von Bismarck and rose as a major threat to Britain in the region.
Now, the unified Germany favored Austria in the Balkans region. All of these tensions between Austria, Germany, Russia, Britain, Ottomans, that led to World War I. अब देखिए, आप इंट्यूटिवली तो हमको ये ऐसा ही लगेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में हमको हमको हमेशा ऐसा लगेगा कि ग्रेट ब्रिटेन विल फाइट अगेंस्ट रशिया, पर ऐसा नहीं होता है ना। 1907 में जर्मनी और रशिया, सॉरी नॉट जर्मनी, ब्रिटेन एंड रशिया, दे साइन अ पैक्ट टू डिलिनिएट देयर इन्फ्लुएंस इन पर्शिया, अफगानिस्तान एंड तिब्बत। और इस पैक्ट को साइन करने के बाद ब्रिटेन को लगभग ऐसा लगने लगता है कि अब ऐसा रशिया कुछ इंडिया लेना नहीं चाहता है, और तब तक बात बहुत लेट भी हो चुकी है, तो अब ऐसा ब्रिटेन का कोई डर रहता नहीं है। एंड देयरफॉर इन वर्ल्ड वॉर 1, ब्रिटेन एंड रशिया fight on one side. And what were therefore the two blocks in World War I? There were allied powers which had Britain, France, and Russia in it. And then there were central powers that had Ottoman Empire, Germany, and Austria. तो ये दो मेजर ब्लॉक्स बनते हैं और जिनके बीच में वॉर होता है। पर अब यहां पर थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट आता है, जो कि राइट इन द मिडिल ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, इन 1917, Tsar Nicholas II, who becomes the last of the Romanov czars, Romanov rulers, is overthrown. Tsar Nicholas II is overthrown by revolutionaries and a democratic government is established। मतलब पहले तो फर्स्ट एक बुजुआ गवर्नमेंट बनती है, मिडिल क्लास गवर्नमेंट बनती है इन February of 1917, and then in October November of that same year in 1917, the Bolsheviks under Vladimir Lenin overthrow this bourgeois government, and लेनिन इज इंस्पायर्ड बाय मार्क्स। बट हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि लेनिन का जो मार्क्सिज्म था वो मार्क्स के मार्क्सिज्म से बहुत अलग था, है ना। बट दे overthrow the middle class government which was established in Feb of 1917 and form the first communist government of the world। अब देखिए, रशिया पहले से ही काफी ऑटोक्रेटिक रहा था, हैड ऑलवेज बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रिफॉर्म्स इन यूरोप, एंड वाज देयरफॉर सीन एज ऑलवेज सीन एज लिटिल अनफ्रेंडली, लिटिल सेक्लूडेड, लिटिल सीक्रेटिव, ऑटोक्रेटिक बाय द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। Now on top of that, it had become an ideological enemy, है ना। ये कम्युनिज्म जिसको इतना रोकने की कोशिश करी वेस्टर्न पावर्स ने अपनी कंट्री में होने से, वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स ने लाइक जर्मनी एंड ब्रिटेन, अब उन्होंने देखा कि ये तो रशिया में हो गया है, खासकर ब्रिटेन, और वो लोग बहुत घबरा गए। सो नाउ इट वाज नॉट जस्ट दिस secluded, secretive, autocratic kind of country, but it was also now an ideological enemy. And more importantly, Lenin said that Russia did not want to take part in this squabbling, like ये जो लड़ाई चल रही है कैपिटलिस्ट कंट्री में, वर्ल्ड वॉर 1, उसने कहा कि ये तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज की लड़ाई है, एंड देयरफॉर वी हैव नाउ बिकम अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो उन्होंने कहा भाई हम तो वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर 1, एंड रशिया पुल्ड आउट ऑफ दैट वॉर, जिसके भी कुछ थोड़े इम्प्लीकेशंस हो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। पर आज का एपिसोड हम यहाँ पर थोड़ा सा we will take pause where we know that we are in 1917. Russia is no more participating in the war because now you have a Bolshevik government, a communist government in Russia, which is suddenly now not just isolated but also like now an ideological enemy for rest of the Western Europe. And before we finish, I just want to make an important note here that Marxism of Lenin का मार्क्सवाद और कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद, ये दोनों अलग अलग मार्क्सवाद थे। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक वायलेंट रेवोल्यूशन आएगा in industrialized nation, but Russia was not industrialized by then. Russia was mainly a farm society. There was no industrialization, and therefore what Lenin said was
that the weakest link of all the industrialization, matlab the weakest industrialized nation, the least industrialized nation will act as a weakest link in this chain of oppressive countries, of middle class government countries, of industrialized countries. So Russia is that weakest link. और अगर रेवोल्यूशन यहाँ आएगा तो यहां से वो सारे वर्ल्ड में फैल जाएगा, ऐसा लेनिन ने कहा था। तो लेनिन, एज आई सेड, लेनिन का जो फिलॉसफी था मार्क्सिज्म का, वो मार्क्स की फिलॉसफी से अलग था। मार्क्स ने ये प्रेडिक्ट किया था कि रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइज नेशन में आएगा। लेनिन ने ये कहा कि द वीकेस्ट, the least industrialized nation will act as a weakest link, and therefore revolution has to come in Russia, और वहां से फिर वो वर्ल्ड में स्प्रेड करेगा, ऐसा लेनिन ने कहा था, प्रेडिक्ट किया था। आगे क्या होता है इस सब को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, एंड आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।